नमस्ते। आज बात करते हैं रीडिंग पर मिलने वाले ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या किताबें पढ़ना हमारे टाइम का सबसे बेस्ट यूज है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आज जो भी हम बात करने वाले हैं वो सब स्टीवन कोटलर की शानदार किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के 9वें चैप्टर पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं कि लेखक पढ़ने के खर्च और फायदों का हिसाब किताब कैसे लगाते हैं। एक पूरी किताब पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है, सुनने में आता नहीं है। और सच कहूं तो इसी वजह से बहुत से लोग किताबें पढ़ने से कतराते भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये वाकई में टाइम का खर्चा है या फिर एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। आइए इसी पर जरा सोचते हैं। तो ठीक है, चलिए इस पूरी बातचीत का एंगल ही बदल देते हैं। इसे टाइम खर्च की तरह देखने के बजाय इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की तरह देखते हैं। मतलब मेन सवाल तो यही है कि हम जो अपना कीमती समय लगा रहे हैं उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है ना? और इसको ठीक से समझने के लिए हम 3 अलग अलग तरह की रीडिंग मटेरियल्स को कंपेयर करेंगे। एक तरफ है कोई नॉर्मल सा ब्लॉग पोस्ट, दूसरी तरफ है एक लंबा चौड़ा आर्टिकल और फिर आती है एक पूरी की पूरी किताब। देखते हैं कि इन तीनों में हमारे टाइम का इन्वेस्टमेंट कैसे अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉग्स की। देखिए, एक एवरेज एडल्ट 1 मिनट में करीब 250 शब्द पढ़ लेता है और एक टिपिकल ब्लॉग पोस्ट होता है मान लीजिए 800 शब्दों का। तो सीधा साधा गणित है, इसे पढ़ने में लगेंगे लगभग 3.5 मिनट। लेकिन उन 3.5 मिनटों के बदले में हमें मिल क्या रहा है, यहां पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेखक बताते हैं कि एक ब्लॉग पोस्ट को लिखने में मतलब रिसर्च से लेकर राइटिंग और एडिटिंग तक करीब करीब 3 दिन लग जाते हैं। सोचिए, हमारे 3.5 मिनट के बदले लेखक के 3 दिन का काम। ये तो काफी बढ़िया डील है। अब आते हैं लंबे आर्टिकल्स पर। यहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। मान लीजिए कोई 5000 शब्दों का काफी रिसर्च वाला आर्टिकल है, उसे पढ़ने में हमें लगेंगे लगभग 20 मिनट। लेकिन उसे लिखने वाले को उसे तैयार करने में कितना वक्त लगा होगा, अंदाजा लगाइए। करीब 4 महीने। हमारे सिर्फ 20 मिनट के बदले राइटर के पूरे 4 महीने की मेहनत। और अब बात करते हैं किताबों की। एक किताब लिखने में राइटर की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा लगता होगा, जरा सोचिए। 15 साल। और यही तो सबसे कमाल की बात है। एक एवरेज किताब जिसे खत्म करने में हमें शायद 5 घंटे लग जाएं, वो असल में लेखक के 15 साल के तजुर्बे, उसकी रिसर्च, उसकी गलतियों और उसकी जीतों का निचोड़ होती है। हमारे 5 घंटे के बदले किसी इंसान की जिंदगी के 15 साल का ज्ञान। इससे बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सच में मिलना मुश्किल है। और ये जो टेबल है ना, ये इस पूरे लेनदेन को एकदम साफ साफ दिखा देती है। मतलब क्या कमाल का एक्सचेंज है। हम अपने कुछ मिनट या घंटे देते हैं और बदले में हमें किसी और के महीनों यहां तक कि सालों की मेहनत और नॉलेज का निचोड़ मिल जाता है ना कमाल? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इस टाइम वाले मैथ्स की नहीं है। रीडिंग के कुछ फायदे ऐसे भी हैं जिन्हें आप नंबरों में तो तोल ही नहीं सकते, पर वो उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, किताबें जो होती हैं ना, वो नॉलेज का सबसे कंडेंस्ड फॉर्म है। मतलब इस ग्रह पर ज्ञान का सबसे निचोड़ा हुआ, सबसे घना रूप। कम से कम जगह में सबसे ज्यादा जानकारी और तजुर्बा। किसी और मीडियम में आपको नॉलेज की इतनी ज्यादा डेंसिटी मिल ही नहीं सकती। इसको एक और एंगल से समझते हैं। सोचिए, हमारे पास 5 घंटे हैं। अब इन 5 घंटों में हम चाहें तो करीब 86 ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हैं, जो लेखक की लगभग 250 दिनों की मेहनत के बराबर होगा। लेकिन अगर हम वही 5 घंटे किसी एक किताब को दें तो हमें मिलता है लेखक के लगभग 3 साल का ज्ञान। ये जो फर्क है ना, ये वाकई में जबरदस्त है। तो टाइम और नॉलेज की बात तो हो गई, पर इसके अलावा भी पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा है। वो है हमारे दिमाग पे इसका सीधा असर। लेखक इसे एक बड़ा फैंसी नाम देते हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल डिविडेंड्स। आसान भाषा में कहें तो हमारे दिमाग को मिलने वाला बोनस। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि रेगुलर पढ़ने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और उम्र के साथ जो दिमागी कमजोरी आती है ना, उसे भी रोका जा सकता है। इसके अलावा ये हमारी हमदर्दी, नींद की क्वालिटी और ओवरऑल इंटेलिजेंस को भी बूस्ट करता है। चलिए, इस पूरी बातचीत को खत्म करने के लिए लेखक एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी सुनाते हैं जो पढ़ने के असली मतलब को समझाती है। ये कहानी है एक जादू की दुकान की। तो लेखक बताते हैं कि वो अपने बचपन में एक मैजिक शॉप में जाया करते थे जिसका नाम था पैंडोराज बॉक्स। वो दुकान मतलब अजूबों और जादूगरी से भरी हुई थी। हर तरह के जादुई सामान, कार्ड्स, सिक्के, सब कुछ था वहां।
तो एक दिन लेखक की नजर पड़ी कि जादू सिखाने वाली जो किताबें थीं, वो दुकान में सबसे पीछे एक कोने में पड़ी हुई थीं। तो उन्होंने दुकान के मालिक से पूछ लिया, आप इन किताबों को सामने क्यों नहीं रखते? ये ज्यादा आसानी से बिकेंगी। दुकान के मालिक ने कुछ कहा नहीं, वो बस मुस्कुराए। उन्होंने अपना सिर हिलाया और दुकान के उस पिछले हिस्से की तरफ इशारा कर दिया जहां वो किताबें रखी थी। और फिर उन्होंने जो कहा वो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, किताबें, अरे असली सीक्रेट्स तो यहीं रखे जाते हैं। तो असली राज सिर्फ उन पन्नों में लिखी जानकारी में नहीं है, बल्कि उस कमिटमेंट में है जो उस जानकारी को ढूंढ निकालने के लिए चाहिए होता है। किताबें सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो राज हैं जो सब्र रखने वाले पढ़ने वालों का इंतजार कर रहे हैं। और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। अगली बार हम द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के चैप्टर 10 की गहराइयों में उतरेंगे, तो उसे जरूर देखिएगा। Welcome to the Explainer. Today, we're tackling a question I think we all wrestle with. Is reading a book really worth the time? We're going to explore this powerful idea of return on investment, but for reading, and the answer might just change everything. Have you ever felt this? You get excited about a new book, and then that little voice in your head pipes up, I just don't have the time. It's a super common feeling, but what if that whole thought process is based on a huge miscalculation? Well, that's the core idea we're digging into, straight out of Chapter 9 of Stephen Kotler's The Art of Impossible. He lays out this fascinating new way to calculate the ROI of reading, and trust me, it might completely change the way you look at your bookshelf. So, this brings us to what the author calls the reader's dilemma. It's that feeling of being short on time in a world that's overflowing with information. And it's not just a feeling, you know, the data shows it's a real thing. Get this. According to the National Endowment for the Arts, the average adult spends just 7 minutes reading for pleasure each day. 7. And to put that into perspective, a Pew Research study found that nearly a quarter of American adults hadn't read a single book in the past year. There's this massive disconnect between the knowledge we crave and the time we actually invest. So, how do we solve this? The author argues that we need to reframe the entire problem. Instead of thinking about the time we lose when we read, we should be focusing on the incredible value we gain. And he calls this new metric the value exchange. So, what is the value exchange? The idea is actually really simple but powerful. When you read something, you aren't just spending time, you're trading your time for the author's time. All their research, their interviews, their thinking, their expertise, it's all been condensed down just for you. So, how does this value exchange really stack up in the real world? We're about to run the numbers on everything from a quick blog post to a full-length book, and let me tell you, the results are pretty jaw-dropping. Let's start with the most common thing we all read, the online blog post. So on one side, we have our time investment, and on the other, the author's effort that we get in return. So, the average 800-word blog post takes about 3.5 minutes to read. That's nothing, right? Not much of a commitment at all. But here's what you get back. For just 3.5 minutes of your time, you get an estimated 3 days of the author's work, their research, writing, and editing. That's an amazing trade. But believe it or not, this is the lowest return we're going to see today. Okay, next up, let's level up to a long-form magazine article. You know, the kind of deep-dive piece you'd find in a top-tier publication. A typical 5,000-word feature will take you about 20 minutes to read. A bit more of a time investment for sure, but still totally doable on a lunch break. And the return on that? For your 20 minutes, you get an estimated 4 months of the author's work. Just think about that. Months of in-depth reporting, dozens of interviews, and careful writing, all condensed into your lunch break. The ROI isn't just a little better, it's on a whole other planet. And now for the big one. The one that always feels like too much of a commitment. Let's finally calculate the value exchange for an entire book. An average 75,000-word nonfiction book takes about 5 hours to read. Okay, that's a weekend afternoon, or maybe a few evenings. It's a legitimate investment of your time. But the payoff is just staggering. For your 5 hours, you receive, on average, 15 years of the author's life. 15 years of their career, their research, their mistakes, and their breakthroughs, all their deepest insights packaged just for you. It's an almost unbelievable return on investment. And when you see it all laid out like this, the difference is just brilliant. It's staggering. For the same 5 hours you might spend scrolling through dozens of blog posts, you could have gotten 15 years of condensed knowledge.
The ROI with a book isn't just better, it's in a completely different league. But you know what? The value doesn't even stop with this incredible time exchange. The very act of reading a book gives you all these other benefits that go way beyond the numbers. This right here is the key takeaway. Nothing else crams so much information, so much detail and nuance into a format you can just pick up and read. Sure, other media can give you the highlights, but books give you the underlying structure, all the important details that are so often missed. And then there are the direct benefits to your brain. All that sustained focus it takes to read a book. Research shows it pays off in huge ways. It's literally a workout for your mind, rewiring your brain to improve your long-term concentration, reduce stress, and even boost things like empathy and sleep. To wrap all this up, the author shares this powerful memory from his childhood that just perfectly captures the unique, almost hidden value of books. So he was obsessed with magic as a kid and used to hang out at this shop called Pandora's Box. The front of the store was a spectacle, shiny props, eye-catching tricks, all designed to grab your attention. But the books on magic were on a dusty shelf way in the back. He was puzzled by this, so one day he asked the owner, a magician named Joe, a simple question. Why do you keep the books hidden in the back instead of out front where they might sell better? And Joe just smiled, shook his head, and said, Books are where they keep the secrets. And that's really the ultimate ROI, isn't it? It's not just a trade of time for time, it's trading a few hours of your attention for access to the secrets it took someone else a lifetime to uncover. So the next time you look at a book and think, that's too much of a commitment, maybe ask yourself a different question. Am I willing to miss out on the secrets? Join us next time as we continue our series and unlock the secrets of Chapter 10 from The Art of Impossible.